बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? फाइन। Okay, I can see all of you. That's good. Nice to see such young people. The future of Pakistan. Hopefully. English Urdu hoga कि you want me in Urdu, English? What do you want? Both language are comfortable? Okay, great. We are here basically to spend an hour with you all to motivate you, inspire you, because you are the future of this country. And this Sailab situation, the flooding, has left many of us totally speechless and in a shock. 33 million people with no roof on the head, no clothes on the body, no food to eat. We are lucky we have food in our fridge. We have a roof on our head, we can wear clothes. But majority of the people in Pakistan don't have it. So this realization at this particular age that you are in will help you when you grow up to be more responsible and committed to making a difference in this country, and this is what we want. हमारा एक प्रोग्राम होता था, we used to do it very frequently couple of years back ago, Genius Method, how to convert an ordinary person into becoming a genius. The reason is that each one of us actually has a genius sleeping inside us and it is never awakened. But once you know how to awaken the genius, not only academically you can improve and do great, but as a human being you become very effective, an effective part of the society, and you can contribute a lot towards the society. So keep in mind, I'm just going to show you some slides making you understand the importance of today's lecture, which you will remember for the rest of your life. And of course you can always get in touch with me whenever you want. My daughter Rouge is here, she is going to teach you something also, and you can get in touch with her also. If you have issues which we know, because we come across a lot of students, you have exam anxiety, you have performance anxiety, there are issues at home, there are rivalries among siblings, and you don't know what to do, where to go. And this affects your performance, in your academic performance में भी affect करती है, human relationship में भी affect करती है, और आपकी personality को damage करती है. So anytime you need help, you can get in touch with us. बड़ा आसान है, Google तो जानते हैं ना सब, Google करते हैं. आज हम Google की वजह से यहाँ पहुँचे. मिस अफशान ने हमें भेज दिया था मैप, हम गूगल से पहुंच गए. तो गूगल पे डॉक्टर मोइज टाइप कर ले, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके, एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट उरूज ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप इफ़ यू हैव इशूज़. एंग्जाइटी हो रही है स्टडीज़ में, कोई प्रॉब्लम है, जेलिसी है, फियर है, वी विल हेल्प यू आउट. बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद फाउंडेशन पब्लिक स्कूल फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स. 19 तो आप बता रही हैं, पता नहीं कब. मेरे दो बेटे अली मुर्तज़ा, दे वर पार्ट ऑफ फाउंडेशन. क्लास 1 से उस वक्त क्लास 1 होती थी. दे जॉइंड एंड टुडे माशाल्लाह दे आर इन US एंड दे आर डूइंग ग्रेट. सो आई ऑलवेज लव टू कम टू फाउंडेशन स्कूल. आई ऑलवेज एडमायर द वे थिंग्स आर हियर. जो मोरालिटी और एथिक्स यहाँ पर है, आई डोंट फाइंड दैट इन एवरी स्कूल इन पाकिस्तान. Yes, I'm amazed. And the reason why was Mrs. Minhaz, Yasmin Minhaz, was my earliest student. Any foundation start होने से पहले, she used to come to me to learn yoga and meditation. Then Mr. Raza Minhaz did some workshops with us. So we know the family, it's like a family. So let's start few things and then we push ahead, okay? अच्छा, by the way, any time कोई question पूछना हो उर्दू में, इंग्लिश में, सिंधी अभी मुझे नहीं आती, पंजाबी भी इतनी अच्छी नहीं आती. आजकल सिंधी प्रोग्राम PTV नेशनल ने रखा है, सिंधी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, बट आ जाएगी सिंधी भी. सो एनी टाइम यू आर वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क एनी क्वेश्चन. ओके, ठीक ठाक है. बट लेट मी मेक यू कंफर्टेबल. अभी डायरेक्ट यू कमिंग फ्रॉम द क्लास? ओके, कोई पेन पेपर नहीं है आपके पास ना? चल होता तो फिर मैं एक और टेक्निक करवा, बाद में करा दूंगा. लेट्स गो एट जी. नेक्स्ट. नाउ यू एक्चुअली डोंट बिकम अ जीनियस, यू आर अ जीनियस. बट वो जीनियस एबिलिटी जो है वो आपकी स्लीपिंग है. कभी अखरोट खाया? हैव यू हैड वॉलनट्स? उसको जब ओपन करें तो 2 पार्ट होते हैं उसके. यू ईट बोथ दोस पार्ट्स, राइट?
The brain is just like a walnut. There is a left hemisphere and the right hemisphere. और उसमें बहुत वर्ल्ड में बड़ी स्टडीज हुई है, बड़ी रिसर्च हुई है. Two doctors, Professor Hawking and Professor Perry, first scientists who discovered that these two halves of the brain basically are called the hemisphere of the brain, and in geniuses they work together. Every student, either the left work or the right works. Right works when you are daydreaming. Left works when you are studying. But if you can make your right work while you are studying in your education, you can do wonders with your grades. It's so simple as that. But it is difficult to make the right work. So we will tell you later on, Uruz will teach you how to make the right work. What I want you is, all of you here, maybe I'll see you a couple of years from now on, I want you to develop these 5. And each of these 5 not only is important for you as an individual, but you as a person who is going to be heading a family soon. Couple of years down the lane, you will be having a family and you will be heading that family. First is ownership. Own. Right? If I come to your house and I say, who is this lady? What will you say? My mom. ये तो नहीं कहेंगे ना, our mom. You say my mom, because the sense of ownership. So just as you have your cell phones and your games console and you have your stuff, this country is mine. It's mine. The sense of ownership becomes very important. And believe me, the time that we are passing through, इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, you need to have this ownership. You own Pakistan. Because if you don't do that, who will? Couple of years from now on, आप में से हायर एजुकेशन के लिए कोई कनाडा चला जाए, कोई यूएस चला जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाए, and then eventually after you complete your studies, maybe you want to stay there, work there, and you become an Australian national or a Canadian national. But remember, your place of birth will always be Pakistan. Your mother tongue does not change. It always remains the same. Whether you become fluent in English, but if you are from a Punjabi family, your mother tongue will be Punjabi. There are certain things that don't change. Zindagi mein kabhi ye change nahi hoti. They always remain the same. And that is what Islam ke andar jo concept hai, taqdeer ka, muqaddar ka, this is what taqdeer is all about. You don't choose your parents. Did you choose your parents? You don't choose your siblings, मेरे भाई बहन कौन होंगे, grandparents कौन होंगे, which country will I be born, what will be the mother tongue, and genetic जो आपको dispositions मिलती है parents से, जो genes acquire करते हैं, that is again is not in your control. This is all fixed. Okay. Other than that, you have free will. Do whatever you want. Want to study, study. Don't want to study, don't study. Join politics. Most of them are uneducated people anyway. The second is commitment. Commitment को अहद कहते हैं शायद, right? If I am not wrong, Urdu, commitment. Now, I don't know how many of you are committed towards a good life, a successful life, a holistic life. क्या आपकी commitment है? But let's say right now your commitment is towards your studies. You wake up in the morning, you come to your school, you study, you interact with your teachers, you go home. Right now you are committed towards becoming an educated person. But education itself is not enough. You need to have awareness also. Without awareness, education is useless. We have many people in Pakistan who are highly educated but no awareness. जिसको शऊर कहते हैं. So commitment should be towards yourself. For example, I commit that I wake up in the morning. I'm not a very religious person, but like say if you want to pray, make sure you're committed to the early morning prayers. You're committed to eating the right kind of food. You're committed to exercises. You're committed to your studies. You're committed to the community that you live in. And you're committed to the country. तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है. Right now things may not seem very acceptable to most of you. But when you grow up and you realize one day in your life that your commitment made you what you were, what you are today. I do a lot of things. I remember, just give you an example बताऊँ मैं.
The first time when I did my first NLP workshop, I studied from USA and a neuro-linguistic programming. You can make people think whatever you want them to think. This is what NLP is. So I was doing my first workshop in Karachi. It was difficult, 5 days workshop. And on the 6th day, in fact 5th day रात Sunday था, and I was supposed to take a late night flight to UST. And UST की फ्लाइट ऐसी थी कि कराची, दुबई में 3-4 घंटे का लेओवर, फ्रॉम देयर बॉस्टन से देन टेक अ बस एंड गो टू अ प्लेस कॉल्ड न्यूश्योवा, न्यू हैम्पशायर, जहाँ ये कन्वेंशन था जिसमें आई एम वन ऑफ द प्रेजेंटर्स इन USA. सो द 5th डे, इनफैक्ट फॉर 4 days से मेरी तबीयत ख़राब हुई. आई वॉज डूइंग इन PC कराची, होटल PC, एंड मुझे याद है 103 फीवर था मेरा. द लास्ट डे, 5th day, which was a Sunday, 103 degree fever tha. I could hardly talk, I could hardly stand, and yet I was conducting that workshop. I could have said, okay, I'm taking it off, we will do it next week once I get well. No, I was committed to completing it on Sunday, and I did that. और रात को वहाँ से went to the airport and then flew all the way to Dubai, Boston से फिर बस लेकर न्यूश्योवा. This is the level of commitment. So whatever I am today, it is because of the commitment that I have made with myself. I can do business, I can make millions. My kids do business also. But I am committed to creating a difference in the lives of people that I meet. ये मेरी commitment है ज़िंदगी में. और मेरे साथ पता है हुआ क्या था? I was in metric end था या first year था, something like that. अब्बू ने मोटरसाइकिल दिलाई. उस ज़माने मोटरसाइकिल was a big thing. आज तो आप लोग प्राडो और लैंड क्रूजर की बात करते हैं, बट एट दैट टाइम मोटरसाइकिल वाज अ बिग थिंग. आई वाज स्टडीइंग इन DJ साइंस कॉलेज, यस आई रिमेंबर. तो नई मोटरसाइकिल ली थी. अब ज़रा न्यू मोटरसाइकिल, यू नीड टू लर्न टू बैलेंस. साइकिल आती थी. आई वाज ड्राइविंग फ्रॉम माई होम टू माई कॉलेज, और रास्ते में अ लेडी वाज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड. पाकिस्तान में जेब्रा क्रॉसिंग तो है नहीं. यू कैन क्रॉस एनी टाइम यू वांट विदाउट लुकिंग लेफ्ट और राइट. आप सीधा क्रॉस कर लें. एंड पुअर मोटर चलाने वाले या गाड़ी चलाने वाले, उनको फिक्र होती कि वो आपको बचाए. लेडी वॉज क्रॉसिंग द रोड, मोटरसाइकिल नई थी. आई वॉज अ न्यू ड्राइवर, आई कुड नॉट, आई फेल वेरी बैडली. आई हैड अ हेलमेट, थैंक्स गॉड. सो आई वॉज लाइंग एंड पीपल केम एंड दे लिफ्टेड मी अप एंड दे चेक कि मैं ठीक था कि नहीं. देयर वॉज नो इंजरी एक्सेप्ट स्क्रैचेज हुए थे. There was a person, total stranger. वहाँ एक छोटा सा कैफ़े था. वो मुझे उठा के कैफ़े में बिठाया. He ordered a glass of water. उस वक्त मिनरल वाटर की ज़रूरत नहीं थी, पानी साफ होता था. And a cup of tea. And he started talking to me. Later on मैंने रियलाइज़ किया कि बेसिकली वो चेक ये कर रहा था कि मुझे इंटरनल इंजरी तो नहीं है, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है. टोटल स्ट्रेंजर, मैं नहीं जानता था उसको. उसने थोड़ी देर बात करने के बाद वो चला गया. उस वक्त मुझे रियलाइजेशन हुई कि व्हेन आई वाज ऑन द रोड, ऑन द फ्लोर, समबडी लिफ्टेड मी अप, अ टोटल स्ट्रेंजर. उस वक्त एक कमिटमेंट की मैंने अपने आप से कि मैं अपनी ज़िंदगी में आई एम गोइंग टू लिफ्ट पीपल. मैं भी लोगों को उठाऊंगा. एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 45 years. Next comes responsibility. You are responsible for a lot of things. You are responsible for your life. Your actions creates subsequent reactions. Every action has equal and opposite reaction. Newton's third law of motion. You need to be responsible for your life. अब होता क्या है? If I fail or if I don't get good grades, it's not my fault. Mom and dad fight the whole day. So I get upset. घरों में होता है, true, right? I know families, उनके बच्चे हमारे पास आए सेशंस के लिए. They are so scared of their dad कि father जब घर में दाखिल होते हैं, बच्चे छुप जाते हैं. They can't even talk to their father because he's a very angry, hard person. And this happens in family. So whenever we don't succeed in life, we have to find somebody to blame. That he is responsible, she is responsible.
कौन ना हो तो इलेक्ट्रिक सप्लाई, बिजली नहीं थी, मैं क्या करता इतनी गर्मी में, हाउ कैन आई स्टडी। आई रिमेंबर अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, आज आपको बता रहा हूँ अशफा साहिबा। एक हमारे पास FPS की स्टूडेंट था, उसको भिजवाया गया। उस वक्त आपके तो FPS भी तो एक ही थी ना, अब तो इतनी सारी हो गई। ही वॉज इन O levels इफ़ आई रिमेंबर, और उसके फादर उसको लेके आए, मिसेस मिनाज ने शायद भेजा था, कि समझ नहीं आ रही ये बच्चा ग्रेड्स अच्छे क्यों नहीं ला रहा। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय बट समथिंग इज देयर, सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इज देयर। तो वो बच्चा के फादर लेके मेरे पास आया, उसने कहा ये ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। So I asked him a couple of questions and then I asked the father to leave us alone so that I can talk to him in private. मैंने उससे पूछा, उसने कहा मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं they all have their own AC, अपने कमरे में सबके AC हैं, स्प्लिट AC, नया नया स्प्लिट AC आया था उस ज़माने में, आई थिंक सेब्रो का था या फिर किसी और का था। If I have my own split AC in my room, I will study. Now this appears to be totally illogical, ना, connection नहीं बनता ना, but because his friends had ACs, their own AC in their own room, he was under a complex, and because of that complex, there was an internal fight going on. ये अंदर की fight बड़ी खतरनाक होती है, जो कश्मकश होती है ना, this is called internal conflict. You want to study, but your friends have their own AC, so this appears to be totally illogical, and believe me, reasons don't have to be logical. Most of the time they are totally illogical. फुजूल बकवास कुछ नहीं है, but yet this is how your brain works. So I said, if your dad gets you a split AC in your own room, will you study? He said, okay, I will. I called the father. I said, I know it's difficult, but would you be able to do it? उसने कहा okay. मैं अपनी सेविंग्स में से कुछ निकाल कर I will get an AC. उन्होंने AC लगा दिया। few months later the kid was great, he was doing very good in his studies, right? So initially he was making his parents responsible for not getting the AC, and that's why he was not studying. So please remember, if you are stuck somewhere in life, if you have anger issue, if you have anxiety issue, आप स्टेज पे आके बात नहीं कर सकते, सोशली आप किसी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, स्टडीज़ में आप वीक हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, डोंट होल्ड अदर पीपल और अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। फैक्टर्स होते हैं, दे विल ऑलवेज बी देयर। USA में सब कुछ है, ना बिजली जाती है, ना पानी का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, राइट? बट पीपल आर लोनली देयर। One of the main causes of suicide and drug abuse is because everybody is lonely. Here, you want to be lonely, nobody gives you the time to be lonely. हैं? आप बीमारों के अस्पताल में जाए, ओए होए होए, वो नीचे गार्ड परेशान हो जाता, लाइन लगती है मिलने वालों की, वहां कोई पूछता नहीं, एक बुके भेज दिया किसी ने, बॉस ने या किसी फ्रेंड ने, and you die alone in the hospital. Most people do that. You are lucky in that way. We are lucky. इस माशरे में, इस कल्चर में, वी हैव पीपल हु रियली केयर फॉर अस, कनेक्टेड हैं हम एक दूसरे से। तो ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम योर लाइफ, ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड विथ यू, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, you are responsible for all of them.